A very good afternoon to all of you. Today we will discuss about digestive system of Amphioxus. Myself Dr. Amrita Shirpate, Department of Zoology, Mahatma Phule Arts and Science College, Patur. Digestive system consists of an alimentary canal and digestive glands. In this alimentary canal is a straight tube from mouth to anus. It is lined by ciliated epithelium. It is divisible into mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, intestine opening by an anus. Hepatic diverticulum is often referred to as digestive gland. Here you will see the figure branchiostoma, general internal structure, lateral view. In this figure, here the snout to anus, it's a long rod-like structure. In the next diagram, you will see the half part of the Amphioxus: mouth, oral hood, buccal cirrus, buccal cavity, velar, tentacles, pharynx, gill slits, gill bar, wheel organs, nerve cord, head sticks, peat, eye spot, notochord, rostrum. ठीक है. Then in the third diagram, this is the alimentary canal of branchiostoma, also known as Amphioxus. First we will start from the mouth. Mouth is a small rounded aperture situated at the base of the vestibule or buccal cavity of the oral hood. It is surrounded by a membrane called velum, act as sphincter which bear 12 slender velar tentacles or linguates on its free edge and helps to close or open the mouth. Mouth जो है वो एक स्मॉल राउंडेड अपर्चर होता है जो कि वेस्टिब्यूल के बेस पे प्रेजेंट होता है. इट इज़ सराउंडेड, ये एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है जिसे वैलम बोला जाता है. एक्ट एज ए स्फिंक्टर, ये एक छन्नी की तरह काम करता है. इसमें 12 स्लेंडर वेलर टेंटाकल्स प्रेजेंट होते हैं. उसकी एज फ्री होती है. ये हेल्प करता है माउथ को ओपन और क्लोज करने में. ओरल हुड एंड बकल कैविटी, द माउथ लीड्स इनटू ए स्पेस एनक्लोज्ड by the oral hood lined by ectoderm called the buccal cavity or vestibule which is funnel shaped. जो oral hood और buccal cavity है ये एक funnel shaped होती है और mouth और oral hood के बीच का जो space होता है वो ectoderm से lined होता है. The free margin of the oral hood is beset with 10 to 11 pairs of oral cirri और oral tentacles. जो free margin है oral hood का उसमें 10 to 11 pairs of oral cirri present होती है. Their number increases with the age and varies from animal to animal. ये जो oral cirri या oral tentacles हैं इनका नंबर एज के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता जाता है और ये वेरी करता है एनिमल टू एनिमल में. These cirri are ciliated and also bear sensory papillae. ये जो cirri है ये ciliated होती है और sensory papillae भी इनमें प्रेजेंट होती है. The margin of oral hood and cirri are supported by stiff gelatinous skeletal rod. ये जो oral hood और cirri है इनको support करता है stiff gelatinous skeletal rod. Next जो organ है उसे बोला जाता है molar organ. The epithelium of the oral hood is projected to form 6 to 8 pairs of finger-like fold, each having a ciliated groove bordered by ciliated ridge. These folds are collectively known as wheel organ or molar organ or rotatory organ. Oral hood में कुछ ऐसे प्रोजेक्टेड 6 to 8 pairs of finger like folds present होते हैं जिन्हें wheel organ या molar organ या rotatory organ कहा जाता है. Outer of these, the mid dorsal groove is the largest and end in a pit or depression in the roof of buccal cavity. This is called headsticks groove. आउटर साइड में मिड डॉर्सल ग्रूव में एक लार्जेस्ट एंड जो होता है वहाँ पे डिप्रेशन प्रेजेंट होता है बक्कल कैविटी के रूफ पर, उसे बोला जाता है हेडस्टिक्स ग्रूव और हेडस्टिक्स पिट. बोथ आर सीलेटेड एंड ग्लैंडुलर एंड सिक्रीट म्यूकस. ये जो दोनों ग्रूव या पिट है वो सीलेटेड होते हैं, ग्लैंडुलर होते हैं और म्यूकस सिक्रीट करते हैं. नेक्स्ट जो पार्ट है वो है वेलम and anteriostome. At the posterior end of the buccal cavity is present a circular membrane
called as velum. It is centrally perforated by an anterostome which leads into the pharynx. ये जो velum होता है या anterostome है, ये जाता है pharynx तक. The velum has circular muscles which act as sphincter for opening and closing the anterostome. वेलम, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो वेलम है उसमें सर्कुलेटरी मसल्स प्रेजेंट होती है और ये स्फिंक्टर की तरह काम करता है जो एंटीरोस्टोम या माउथ को ओपन और क्लोज करने के काम आता है. द एजेस ऑफ द वेलम बियर 12 और मोर स्लेंडर सीलिएटेड वेलर टेंटाकल्स विच नॉर्मली प्रोजेक्ट बैकवर्ड फॉर्मिंग अ स्ट्रेनर. इसमें इसका जो वेलम है इसमें 12 और मोर स्लेंडर सीलिएटेड वेलर टेंटाकल प्रेजेंट होते हैं जो कि बैकवर्ड फॉर्म में होते हैं और ये एक छन्नी की तरह काम करता है. नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो है फेरिंग्स. द फेरिंग्स इज अ लार्ज लैटरली कंप्रेस्ड सैक ऑक्यूपाइंग नियरली 1/2 एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी. जो फेरिंग्स होता है वो लार्ज होता है और ये 1/2 पार्ट ऑफ द एंटीरियर बॉडी को कवर्ड करता है. इट इज सस्पेंडेड इन द arterial cavity which enclose it from all sides except the dorsal. The wall of the pharynx are perforated by nearly 200 oblique vertical slits, the gill slits or branchial aperture. The portion of the pharyngeal wall separating the cleft are known as branchial lamellae. जो pharyngeal wall जो होती हैं वो separate करती हैं cleft को, उसे बोला जाता है branchial lamellae. Each lamella is supported toward its outer edge by a rod made of elastic fibers, the branchial rod. The rod are united with one another dorsally by loop but free ventrally. ये ventrally free होती है but dorsally ये एक loop form करती है. The rods at their free end are alternately forked and simple, known as primary and secondary branchial rod respectively. The branchial lamellae bearing the primary rod are primary lamellae and those lodging the secondary rod are secondary lamellae. Transfer branchial lamellae supported by branchial rod connected the primary lamellae at regular interval. The inner and lateral face of each lamellae are provided with long cilia. On the ventral wall of the pharynx is a longitudinal groove, the endostyle. The groove is composed of 4 tracts of mucous gland, each separated from the other by tract of ciliated cells. A longitudinal groove and epipharyngeal or hypopharyngeal groove lined with cilia is present on the dorsal surface of the pharynx. A pair of lateral groove, the peripharyngeal band, encircle the mouth and the anterior end of the endostyle. They meet dorsally and join the epipharyngeal groove. The next जो part है वो है esophagus. The esophagus join the midgut posteriorly. Esophagus midgut से posteriorly join होगा. At the junction of the two, a large pouch, the hepatic diverticulum or liver or midgut diverticulum is present. The diverticulum run forward for some distance along the pharynx and its right side. Large cilia are present on the inner surface of the dorsal and ventral wall. Zymogen cells in the diverticulum secrete hydrolyzing digestive enzymes. Next जो है वो है hindgut. The posterior narrow tapering part of the intestine is known as hindgut. Then anus. The hindgut posteriorly open outside through a narrow circular anus. The anus lies at the base of the caudal field just toward the left side. The anus is guarded by a circular sphincter. So this is all about the digestive system of the Amphioxus. Thank you.